Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Okay, बेटा आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Okay, thank you very much for the answer. Today internet is not as stable as it should be, and it is giving problems. So some of you might not hear the voice properly. आज का सेशन जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूं। साद आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा, बोले। नहीं सर, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। थैंक यू। फिर आपका जो वॉइस है वो मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके, बल्कि हो गया वो। ओके, थैंक यू। So first of all, any question from the last session जो कि introduction to information technology और कंप्यूटर से related हो? So student may raise their hand and I will then ask them to say their question ताकि वो अपना question पूछ सकें। Okay, if there is no question, let's start today's session, and this is related with files, directories, and the file system. I am sure you are already familiar with due to the widespread of mobile phone and the Android operating system. These things are no more a mystery, but the way कि किस तरीके से जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिस्टम के अंदर सेव होते हैं। तो आमतौर पे we have a file manager, and that file manager has different for example different sections in the window, and we have a title bar as well, we have a status bar as well, and then we on this side we have a number of files with number of folders. So this is called the folder view. The folder view. And it is a primarily a tree structure जिसमें जो है वो एक स्टेम है और उसमें से लीफ आगे जो है वो निकल रहे हैं। And then here we have primarily the main window in which we can see the files and different folders in the directory. Okay, so directory is also nothing but it's a folder. Folder कहते हैं हम इसको, and folder contain many other folder or it contain files we call documents. हम इनको documents कहते हैं। And there is something which is related with the operating system, OS, the operating system, the way how the operating system internally manages it. थोड़ा सा मैं इन डेप्थ में बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, फिर हम इस जो है इसको आगे जो है वो अरेंज करेंगे। So we as a human when interact with the computer, so computer is nothing but primarily providing OS as an interface to us, and within that there is a storage, and that store is primarily managed by the processor and the operating system. That means the hardware and software both, they manage the data. Data is usually in the form of files, and these files are organized in the form of directories.
जैसे आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट 1 है और उस सब्जेक्ट की 1 की क्लास 1 का जो है वो बुक है, उसका कोर्स आउटलाइन है और उसकी लैब है, और इस तरीके से these are the different, there may be multiple books, 1, 2 and 3 books, and similarly there's course outline contain different topics, topic 1, T1, T2, T3 and so on. And similarly lab contain the practical or the experiment 1, experiment 2 and experiment 2, 3, so on. So the data is arranged and user interact with the operating system to make the different folders, directories and different files, and then save those files and then retrieve those files. So this is just an overview. Internally there's a processing and a CPU primarily control everything, and this CPU primarily contain a control unit, and that control unit do some processing based on the commands which is received from the user through a user interface, and that user interface is primarily called the operating system, and this is how it goes. Okay. Okay. So first of all, the files and the directories. Okay, the file system has two levels of abstraction. There is a physical nature of the file system, the data storage devices, the file index, the mapping process of taking a name and identifying its physical location within the hard disk or on another media. For example, अगर आपने अपना डेटा USB पे रखा हुआ है और इंटरनेट पे रखा हुआ है गूगल ड्राइव में, फॉर एग्जांपल, there is also a logical nature of the file system and how the physical system is partitioned into the independent name entries. Both user and system administrators are mostly interested in the logical file system. इसको थोड़ा सा recap कर लेता हूँ मैं जल्दी से. So the file system has two abstractions. One thing which is appear, यानी जो हमें नजर आती है, that is a physical जो हमें नजर आ रही होती है. द सेकेंड थिंग इज जो हमें नजर नहीं आ रही होती, दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल. ओके, जो हमें नजर आ रही होती है, इफ वी कैन सी द हार्ड डिस्क, एंड दीज आर प्राइमरली द पार्टीशंस inside the computer, and there may be these partitions may reside on a single hard disk as well. जब हम कंप्यूटर सिस्टम को खोलेंगे उसमें हमें हार्ड डिस्क नजर आएगी. So these partitions reside inside the hard disk. So we say these are the logical partitions, but they reside inside a physical partition. और इसी तरीके से the structure of different folders. So here in this diagram there are 7 folders. Okay, so the name of the folder and the type of the folder sometime is explanatory on the name of the folder, यानी इससे पता चल जाएगा मैं इसमें documents है ना. There are videos, there are pictures. So this displays actually everything we copy paste on the desk. It will appear on the desktop of the computer. Similarly, music, this is another folder, 3D objects, another folder. And on the right side, if on the left side, we can see there is primarily a structure. And this structure, on the top of this structure, we can see there's a title, and there are some menus which are available on the title. And similarly, there is a primarily an area in which shows where we are at this point in time. Okay, this spacing. So this is a small picture जो कि कॉपी मैं अपने सिस्टम से बनाई थी किसी ज़माने में. But this kind of structure is evident when you primarily open the Explorer in your computer.
And similarly on Android, there is a file manager and similar applications which show the same structure inside. So a recap, this slide shows the introduce the files and the directories and the physical and the logical nature of the file system. Now we go inside. Inside we can see through the computer management and through the computer management in the disk management. Okay, disk management as one example. So physically we have two disks, disk 0 and disk 1. In logically each disk is partitioned, उसको different हिस्सों में तकसीम किया गया है. Partition in C and partition in D. There are also some areas which are used by the operating system and which are primarily accessible if we want to. Okay. Similarly, so there is a space which is available for use about 300 GB, but it is not primarily currently in use. There are other things as well in this diagram because computer management encompasses many different areas, but our focus at this point is in the disk management only, because in this topic we are interested to know where the files are, where the folders are, and what is the file system which is being used. Okay, in Windows, the file system is called the common file system is called the NTFS, New Technology File System. So similarly, every operating system has a different file system, and this file system actually are the guidelines how the system operating system arranges the folders and files inside the storage. So similarly, these partitions are written over here, but we are not interested at this point in time. We are only interested in the layout of the disk management. Okay, only the layout of the disk management. We want to identify the physical components as well as the logical components. Okay, यहाँ मैं पूछना चाहूँगा if students have any question. No, sir. Okay, Sir? me ask जी फारिया कुछ पूछना चाह रही है, बेटा पूछे. जी सर, मैं न्यू आई हूँ, तो पिछले जो लेक्चर्स है थ्योरी के, तो वो कहाँ अपलोड किया आपने? बेटा मेरे ख्याल में ये अच्छा सवाल होगा अगर सीआर जो है वो आप बाद में दे दें आंसर. इस तरीके से तो ये क्लास थोड़ा इंटरप्ट हो जाएगी ना. सो इट इज़ बेटर कि आप सीआर से राब्ते में रहें एंड सीआर इज साथ अच्छा. वो आपको बता देंगे बेटा. ठीक है, इट्स क्वेश्चन इज नॉट रेलिवेंट बट दिस इज द गाइडलाइन इज प्रोवाइडेड. ओके, इफ देयर इज एनी रिलेटेड क्वेश्चन. Okay, if there is no question, then we move ahead. I'm sure you have actually recorded video very shortly, and if you want to have any question, you can post your question in the group. ताकि जो है वो कोई भी आंसर दे सकता है. इट इज़ नॉट एक्चुअली नेसेसरी कि मैं उसका आंसर दूं, बट इफ़ यू वांट टू जो है इसके बारे में कुछ और जानना चाह रहे हैं. So some of the diagrams are available in the book. Some of the diagrams I have recreated so that the information may be more recent. So in this diagram, if we can see here, we have a view in which we have the partitions. Remember, the partitions are the logical structure, and then we have folder or directories. These are the folders and the directories. And in our case, we have the files. These are the different files.
एंड द डिफरेंट फाइल टाइप्स, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी नज़र आ रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। सिमिलरली एक टेम्पलेट भी नज़र आ रहा है, पावर पॉइंट की नज़र आ रहा है, और जो एक डेटा स्टैटिस्टिक्स का टूल आर है उसके भी नज़र आ रहे हैं। देर आर सम PDF files as well, and similarly there's a text file as well. So different files are there, and each file has a different type, or maybe some types are some documents are of similar type. So this is how the folders and the directories appear primarily in a Explorer, Windows Explorer on Windows 10, for example. So in the last diagram, we have seen three different structures. One is called the partition, and one is called the directory or the folders, and the documents are the files. How we can actually describe them in using English language में या किसी भी language में हम कैसे describe कर सकते हैं? Okay, a partition is a logical division within the file system. Okay, in Microsoft Windows, a partition is denoted using a letter, for example C. इसमें लिखने का तरीका है C कोलन, और ये जो है ना ये यूज करते हैं रिवर्स जो स्लैश होती है, बैकवर्ड जो स्लैश होती है, एक फॉरवर्ड स्लैश होती है, एक ये बैकवर्ड स्लैश। ओके, वर्सेस द D, C और D दो डिफरेंट पार्टीशंस हैं. Might both refers to parts of the hard disk, but to two separate partitions. Okay, there is also another operating system which is called Linux, another operating system. A partition refers to a separate logical disk drive, although there is also some more information, but we are not interested in. So Windows, Linux, and similarly the Android operating system. So they have different partition types. और स्ट्रक्चर उसमें यही होता है कि देर आर सम ड्राइव्स, फोल्डर्स, and some partitions. Directories, which are also known as the folders, allow users to coordinate where files are placed. ये असल में कैटेगरीज हैं फाइल्स की जो आपने बनाई हैं ताकि आप फाइल्स को कलेक्ट कर सकें या रख सकें किसी एक सेफ प्लेस में. Unlike partitions, which are few in numbers, you can create many directories. तो ये इसका फायदा है. Files are the meaningful units of storage in a file system. Usually we are working on the files, image files, document files, Microsoft Word, PowerPoint files, and similarly PDF files. They comprises the data and programs. There are also code files, programming code, source code. Although we can think of programs as being special type of data files come in all sizes and types, and they might be text files, formatted text files using special escapes or control sequences, or binary files. Binary files means the executable files, applications जो आप install करते हैं ना अपने system में. These are the apps. Similarly, the Microsoft Word, it contains different control characters and special escape sequences to format the document accordingly. So this is a pretty much overview of how the partition can be defined, how we define the files, and how we define the folder. So this is related with the last slide. Moving ahead. Okay, so this is another view in which because nowadays the cloud storage is common. Commonly we are using the Google Drive, for example, and if we go to the Google Drives, we can see the folders, and similarly these are the hypothetical folders created for just a demonstration, and similarly we have the files, and there is also a quick access space like in the computer where the recent files are placed. So in the Google Drive we can also arrange our folders and files in a way which is more appropriate, जो कि हमारे अपने जो टेस्ट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हो.
So in an Android file system, which is we know that mobile phone, because of the famous Android operating system on smartphone devices, because of its very ease to use and nature, open source nature. So its file system is usually comprises of a slash, and this is called a root, and also there is a folder which is called root, and similarly some special folders are system partitions. The operating system exclusively uses on those folders, and we if we insert a SD card, जो कि हम उसमें आमतौर पे मेमोरी कार्ड डालते हैं अपने फ़ोन में, then usually the applications and the data are stored over there. Similarly, we have the two type of cards. One is the external and one is the internal. So internally is by default in use, but we can also use the external SD card as well for our data mostly. Usually applications जो है वो इसको यूज़ नहीं कर रही होती, ओनली फॉर डेटा स्टोरेज के लिए हम आमतौर पर या बैकअप के लिए यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली, ताकि इम्पोर्टेंट फाइल्स जो हैं और डायग्राम्स जो हैं उनको हम यहाँ सेव कर सकें बैकअप पर्पस. So there are also other files which we should know. These files exist in the form of computer viruses, and these are the unwanted programs. I leave it this slide for yourself to read in your spare time. The virus is primarily a program which we do not want in our system, and we have antivirus programs, and similarly there are different variants of the virus. Usually the most common variant is called the malware. However, there are other today's common are the adware, which just come in every program, और कुछ कुछ देर बाद एडवर्टीजमेंट आती रहती है कि ये खरीद लें, वो खरीद लें, ये अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है. And there are some crackers, that mean they actually make changes in the systems. Virus itself may or may not be harmful, but this Trojan horse type of virus is very primarily dangerous, because they primarily make system vulnerable. इसकी terminology बिल्कुल अलग है, और if they are collectively called malware. So malicious code, mal is primarily short form of the malicious, which is mean dangerous. So malicious, the dangerous code, which if execute can harm the different files and the structure of the storage inside the system. So modern operating system contains the anti-malware and anti-spareware programs inside. For example, in Windows, there's a program which is called Windows Defender. So it is included in the Windows. Previously, there were some companies, and still they are around. They produce different antivirus software, but now the operating system, because the closed nature of the operating system in Windows, Microsoft has not disclosed each and every part of the Windows to the user area. So the closed nature can make developers of the antivirus programs difficult. So the operating system vendors, for example, Microsoft, provide the applications for the security purpose. So in Windows, the virus and threat protection, Windows security, available in the Windows security, and we can scan. Currently, the program is scanning, and quick scan is in action, about 6 seconds, and 5,000, more than 5,000 files has scanned, and still there are some files left. So this is a snapshot which were taken just for the demonstration purpose. So this ends the program with the
our today's session, which is related with file directories and the file system. Now, I would like if students have any question regarding today's lecture. कुछ स्टूडेंट से मैं पूछना चाहूंगा. लेट्स स्टार्ट विद हिबा सलमान जी. बेटा आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज. ओके हिबा सलमान, आपका कोई सवाल है? ओके लेट मी. नो सर. थैंक यू. मलाइका, आपका कोई सवाल है बेटा? Okay, any other student if have any question? The topic was very simple. It was not as difficult. We are already familiar with this. Nishwa has a question. जी बेटा आप बोल सकते हैं प्लीज. सर मैंने पूछना था कि एक जो डाटा फाइल्स के अंदर जिप फाइल्स भी आती हैं और सर बाइनरी फाइल्स को अगर एक्सप्लेन कर दें आप दोबारा से तो वो कौन सी होती हैं? Okay, thank you very much. Nishwa, I have two questions. पहला क्वेश्चन जो है वो इनका एक ऐसी फाइल के बारे में है जो कि जिप फाइल कहलाती है या आर्काइव कहते हैं उसे, which is primarily a compressed file or maybe more than files in a compressed format. So these formats are common to save actually the storage, so that the files can be downloaded and can communicated from one place to another place, ताकि उनके लिए टाइम भी कम लगे और वो एफिशिएंटली जो है वो मूव हो जाए सिक्योरिटी के हिसाब से. So these files are very common. Zip files are the archive files. Initially there were some programs which were used to, and still they are, like WinZip and 7-Zip. These are some of the famous programs. So the files are compressed with some algorithm, and the number of zeros are removed. The most common way is to remove number of zeros inside, or the repetition of many ones if they come in the file. तो एक तरीका होता है जिसके तरीके से वो कंप्रेस बनते हैं, बट इन विंडोज देयर इज ओनली वन क्लिक ऑपरेशन. आप फाइल सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और देयर इज एन ऑप्शन और वो आर्काइव हो जाएगा. The second question is related with the binary file. Binary file is primarily a machine language file, and computer understand the machine language. हमने जब बाइनरी जो टॉपिक बाइनरी में पढ़ा था उसमें हमने ये बड़े अच्छे अंदाज में ये चीज़ सीखी थी कि कंप्यूटर सिस्टम ओनली नो द बाइनरी and these digital system can execute the sequence of 0 and 1 only. So that's why a binary file. और मोबाइल फ़ोन में अगर आप देखें तो जो आप गूगल प्ले से या किसी भी जगह से जाके कोई ऐप या पीके फाइल जो है एपीके जो फाइल होती है वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं. सो दैट इज़ प्राइमरीली ए बाइनरी फाइल जो कि कंप्यूटर उसको जानता है. होप आंसर द क्वेश्चन. जी निशवा, आप सवाल का जवाब समझ पाए हैं? यस सर, थैंक यू सो मच. Okay, you can lower your hand now if any other student have any question. Okay, I guess no question. Now we move towards your assessment part, and your assessment part is arranged on the LMS. So I go to the LMS. Okay, you can see your assignments and quizzes here. Okay, now you can attempt your quiz 1. It is a 10 minutes quiz, and it has a multiple choice question, true, false, and fill in the blanks question.
So you can attempt your quiz 1 at any time. I suggest to attempt in 10 days, यानी before your next class. अगर आप इसको कर सकें किसी भी टाइम अटेम्प्ट कर लीजिए. Similarly, you can in your assignment 1, which is related with your primarily your the newsletter. You can do assignment 1 later, but you can do assignment number 2. In assignment number 2, you have to आप अपना मोबाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा कोई और मोबाइल जो आपको इंटरेस्ट करता है मार्केट में, आप उसको सेलेक्ट करके उसके स्पेसिफिकेशंस आपने जो है वो लिखने हैं. It is just an assignment which highlights. मैं अगर आप इसको दिखा दूं आपको तो. So assignment 2 is related with Excuse me, sir. yes. सर मेरा तो LMS का प्रॉब्लम अभी तक हल नहीं हुआ, इसलिए मुझे कोई असाइनमेंट इस तरह की चीजें नहीं मिल रही, तो फिर मैं कैसे सबमिट करवाऊंगी? Okay, you have to wait. Number 1. Number 2 is that it is possible कि हम आपको असाइनमेंट जो है वो थ्रू शेयर कर दें. ये जो है व्हाट्सएप शेयर कर दें फॉर एग्जांपल, या आप अपने किसी सीआर से कहें कि वो डाउनलोड करके आपको प्रोवाइड कर दें. वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कीजिएगा प्लीज़. ये पहले भी मैंने देखा था कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद प्रोवाइड करते हैं. ये वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है. तो असाइनमेंट 2 यू हैव टू अपलोड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. आप अपनी जो काम है वो उस पर करके, क्या नाम है, पेज पे किसी पे करके उसका फोटो खींचे और उसको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर डालें और उसके बाद आप मुझे भेजें. और दूसरी चीज़ ये है कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप भी कर सकते हैं. तो इसमें सैंपल दिया हुआ है. तो जिनका प्रॉब्लम है एलएमएस का, दे हैव टू वेट. वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके अपने पास रख लें. जैसे ही एलएमएस अवेलेबल होगा उनको, वो अपना जो असाइनमेंट है कंप्लीटेड वो उसको वहाँ अपलोड कर देंगे. अभी हमने इस पे कोई टाइम ओके सर. सेट नहीं किए. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर. यस सर. बेटा बोले. जी मानूर, आप बोल सकते हैं बेटा. कर दिएगा, वो नेट इशू हो रहा है जी. मैं बोलिए कोई सा आप दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, नेट इशू है तो मुझे जरा आवाज सही नहीं आ रही थी. कोई सा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम. नेक्स्ट वीक से पहले कर लीजिए ताकि आपकी ये टास्क कंप्लीट हो जाए. ओके सर. सर इसके मार्क्स हमें कहाँ पर मिलेंगे? जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा इसी इंटरेक्टिव सेशन में ना, तो मार्क्स ऑटोमेटिकली कंप्यूट होते हैं. ओके सर. ये मिड टर्म में इंक्लूड होंगे? बेटा जो भी सवाल करना चाह रहे हैं वो अपना हैंड रेज करे, मैं उसको टाइम दूंगा. आप बीच में बोलेंगे ना वो मिक्स हो जाएगा. ओके जी बोले आप. बेटा आप पूछें. नहीं, मरियम से पहले वो जिन्होंने सवाल पूछा था. बेटा आप पूछे सवाल. सर ये जो मार्क्स जो है इसके, ये मिड टर्म में इंक्लूड होंगे? मिड टर्म के मार्क्स अलग होते हैं. ओके, पहले मैं इनके सवालात जो सवेज, बेटा आप पहले पूछें. सर मेरा भी सवाल था, इन्होंने पूछ लिया. नहीं, मिड टर्म अलग होगा. ये 20 मार्क्स जो है ना उनमें काउंट होगा. हम 3 असाइनमेंट लेंगे, 3 क्विज लेंगे और उनमें बेस्ट 2 जो है वो हम इंशाल्लाह काउंट करेंगे. जी बेटा मरियम, अब आपकी बारी है. आप सवाल पूछ सकते हैं. सर हमारे मिड टर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? जनवरी के पहले वीक में. जी बेटा फारिया, अब आप पूछें. सर वो मैं कह रही थी कि मेरा तो प्रीवियस कोर्स जैसे कवर्ड नहीं हुआ तो मिड टर्म इतनी जल्दी कैसे दूंगी मैं. बेटा फारिया आप परेशान ना हो.
आप जो है वो CR या अपने किसी जो है वो, मैं राबिया से बोलूँगा, राबिया मिस इनका फारिया को जो है वो आप एक अलग सेशन में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। हैं? अच्छा फारिया, आपको जो है वो मालूम होना चाहिए कि जो है वी हैव टू सेशन, वी हैव टू लिंक्स. One link is with the Google folder and one is the playlist at YouTube. So you can get